किसानों की लागत कम हो, उत्पादन उसका बढ़े। ये एक सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में से केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रही हैं और आज इसी का सबसे बड़ा आज उदाहरण है कि आज देश के अंदर खाद्यान्न का इतना बड़ा भंडारण है कि आज दूसरे दुनिया के देशों को हम खाद्यान्न के क्षेत्र में हम उनको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और इसी के साथ क्योंकि अलाइड सेक्टर कृषि का माना जाता है डेयरी सेक्टर, और डेयरी सेक्टर के अंदर भी आज एक नई इबारत देश लिखता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, लगभग 50 देशों से करीब 1500 प्रतिभागी इसमें भाग ले रहे हैं। ऐसे में इंटरनेशनल लेवल पर अगर हम देखें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो एक मैसिव लेवल पर यह पूरा कार्यक्रम है वो आयोजित है और ये सम्मेलन काफी The global charismatic leader, the champion of the earth, as he joins us for this inaugural session. Also a good greetings to the Honorable Chief Minister of Uttar Pradesh, Yogi Adityanath ji, and to Shri Purushottam Rupala ji, the Honorable Minister of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Government of India. Please be seated. Namaskar to everyone. Excellencies, ladies and gentlemen, a very hearty welcome to one and all, and a pleasure to be greeting and welcoming all of you to the inaugural session of the IDF World Dairy Summit 2022, which is happening in India after 48 long years. Last time when we had it in the year 1974, that time we were a milk deficit country. But today in 2022, as we stand here to welcome you all, we stand so very proud that today India is not only a milk self-sufficient country, but also the world's largest producer of milk. Further, ladies and gentlemen, the Indian dairy sector is growing almost double the rate as that compared to the world average, with a very unique self-sustainable model that provides livelihoods and supports the small farmers, the landless farmers, some 8 crore of them, eliminating the middlemen, giving them a regular source of income, and where women have been the key drivers of growth, they have been the main change makers in this sustainable model, and we stand so very proud of this cooperative model of the dairy sector. But then, ladies and gentlemen, further we all agree that world over, we all struggling to maintain a balance on 3 important dimensions of sustainability, that of economic, environment, and social sustainability. And thereby it becomes important towards viewing the dairy industry as a nucleus of other allied activities, the promise which it can bring towards addressing the food and the nutritional security, towards providing livelihoods to the people, and the promise towards protecting the environment. So as we discuss on this very important aspect for the global dairy industry, at the very onset, on behalf of all present here, on behalf of the entire global dairy industry, we would like to first thank the global charismatic leader, Honorable Prime Minister Modi, who has been a global beacon of change, transformation, adaptivity, someone who has been encouraging and promoting the traditional wisdom and knowledge, and at the same time, new technologies, innovations, and out-of-box thinking. He, ladies and gentlemen, has been a global crusader for economic, social, and environment sustainability, and under his dynamic leadership, today, India is marching ahead towards shaping a more inclusive, equitable, climate-sensitive, clean, green, Atmanirbhar growth for a happy, healthy, prosperous, and a globally. And as the entire dairy industry stands in letter and spirit with the Honorable Prime Minister's this vision and determination, on behalf of everyone, we would like to first thank, once again, let's, ladies and gentlemen, join in thanking the Honorable Prime Minister in leading this summit here. And may I request our Honorable Minister, Shri Purushottam Rupala ji, to kindly felicitate the Honorable Prime Minister with a shawl on behalf of everyone present here. And presenting this very special memento to the Honorable Prime Minister. This memento, ladies and gentlemen, is of the Iron Man of India, Sardar Vallabhbhai Patel, who set India on the Milky Way. In fact, he advocated the farmers for setting up the cooperatives, and the cooperatives setting up their plants. The seeds which he sowed, we are reaping the fruits today.
So let's begin, ladies and gentlemen, the summit as per our Indian traditions and customs by invoking the blessings of the Supreme Power. And for that, we have the 4 students from Gurukul who are going to be rendering the Swasti Vachan. Shri Gurubhyo Namaha. Hari Om. Swasti na Indro Viddhasaravaha. Swasti na Pukha Vishwavedaha. Swasti na Staraksho Aristanemihi. Swasti no Brihasapatir Dodhatu Brihadasava Marutaha Prishni Mataraha Suvanjavano Vidate Gojagamayaha Agni Jigva Manavaha Surya Chakshasho Vishveno Deva Avasagamanniha Bhadram Kardevihi Shrinuyama Deva Badram Pasyeemaksha Virajajataraha Sthirairangai Tushtoa Gosastano Mirvashe Mahideva Hitan Jadayuhu Sataminno Sarado Antideva Jatara Nashakara Jarasantano Namma Putraso Jatara Pitaro Bhavanti Mano Madhyari Rikata Yurganto Aditirjo Raditi Antarikshamadir Mata Sapita Saputraha Vishwe Deva Aditihi Panchajana Aditirjatam Aditirjanatavam Payaha Prithiviyam Payaha Kadikho Payo Divyantarikshe Payodhaha Payasavatihi Pradishaha Santumayamma Sarvebhyo Namo Namaha. Thank you for this auspicious beginning and infusing so much of positive energy of the air. A prayer towards wishing everyone's peace and prosperity. And ladies and gentlemen, as you are aware, the International Dairy Federation is headquartered in Brussels. It was established in the year 1903. And it has been the leading source of all technical and scientific information to the various stakeholders across the value chain of the global dairy sector. This is an annual conference which they have been organizing, and as we thank them for choosing this year India as the host, we are really grateful and delighted to have the president of IDF joining us, Mr. Cristiano Brazel, especially joining us from Brussels. So, as once again thanking him, I now invite him for his words of welcome and his opening remarks. Mr. Cristiano Brazel, President, IDF. माननीय प्रधान मंत्री महोदय, इस डायरी शिखर सम्मेलन में आपकी गरिमाही उपस्थिति हमारे लिए गर्व की बात है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi Ji, Chief Ministers Shri Yogi Ji and Shri Bhupendra Patel Ji, Union Minister of Fisheries, Animal Husbandry and Dairy Shri Parshata Rupala, Minister of States Dr. Balia and Dr. Murugan, President of Indian National Committee and the Secretary Shri Spang, and dear Minesh Shah, and officers of NDDB, our dear Indian hosts, international guests, ladies and gentlemen, welcome to the IDF World Dairy Summit 2022.
This is not ordinary opening. This is the comeback of IDF World Dairy Summit after 2 years of recess due to the pandemic. This full auditorium, the extraordinary exhibition center, the quality of the crop program, panelists and public speak out about the unequal recovery capacity and resilience of the global dairy sector. And this makes me so proud, so enthusiastic about this summit and so optimistic about the future. I hinted it before, but now I'm sure our sector, all of you here present, are capable to overcome any obstacle, no matter how hard and challenging it is, and not only survive, but become even stronger. You will see it around this venue. You will hear in the multiple sessions that we'll have. You will learn it from the conversation and discussions from your colleagues and friends you will meet year after 2 years. Yes, we are stronger, we are wiser, and we are better. During these last 2 years, not did we only renew our long commitment with the noble purpose of nourishing the world with nutritious, healthy and sustainable foods, an activity that the dairy sector has been performing for thousands of years, since the beginning of the time. But we have also strived to do it under the most difficult circumstances, and we made it. Billions of people around the globe depend on the daily work of all us to keep production, processing and commercialization working in a changing world and environment. At least 1 billion people depend on the livelihoods we provide. And all together, we manage to do so based on the determination, courage and consistency of millions of farmers, workers and traders from every corner of the world that never gave up, that never quit, that never escaped the risk of exposing themselves and their families to an unknown threat to the safety of their homes, but continued milking, processing, transporting and selling their products openly with the same quality and goodness to the consumers. We encourage you to download IDF Annual Report 2021-2022 from our website to learn more about our achievements and join us for the closing session on Thursday before lunch. We have always known it, but as it usually happens in crises such as the one we dealt with in the past years, the insights and reflection you get from them make you more aware, more conscious and more responsible than ever. During these years, we doubled our efforts to produce safe, quality and affordable milk and dairy products in even more sustainable ways. We assumed new commitments in terms of carbon footprint and greenhouse gas emissions reduction, improving animal welfare and climate action that add up to the Dairy Declaration of Rotterdam adopted in the World Dairy Summit of Rotterdam 6 years ago. During these challenging 2 years, we launched the Pathways to Dairy Net Zero initiative with Global Dairy Platform and other organizations supported by larger numbers of farmers, processors and companies from around the world. And we started relevant discussions in multiple forums such as the UN Sustainable Food System, COP26 and the upcoming COP27. On Thursday, we will launch the revised IDF LCA methodology, the well-recognized tool to calculate greenhouse gas emissions in the dairy sector. IDF is proud to have led and supported the global dairy sector in this fascinating and challenging journey to the future. Everything like you are going to experience during these days is part of that support.
that commitment with the global dairy sector that has lasted for the last 190 years and will certainly last many more. As you will see, we are already managing and building the future of dairy. In the next few days, you will be inspired by leaders, farmers, and experts. We invite you to attend at the end of the day the IDF Dairy Innovation Award ceremony. Dairy is part of a sustainable diet and food system. As former UN Secretary Ban Ki-moon said at the IDF World Dairy Summit 2018 in Daejeon, South Korea, milk is perfection. Milk is a complete food and rich source of important nutrients such as proteins, carbohydrates, vitamins, and minerals in biologically available forms. And dairying provides livelihood and economic resilience to millions of people across the world. At the same time, the dairy sector is an essential contributor to the UN Sustainable Development Goals. We are so happy to be in India for this year's summit. Personally, also, I am really happy, considering that India is the largest producer of milk and considering the important role of milk in India, culture and economy. It makes perfect sense to bring our worldwide dairy community here for this timely learning and networking event. I would like to finish by thanking the National Dairy Development Board of India and the organizing committee, as well as to all the people that worked for almost a year for the fantastic job they have done in making this World Dairy Summit possible, the greatest annual event of the global dairy community. I also would like to extend a big thanks you to all the people of the National Capital Region of Delhi and India for their hospitality. Honorable Prime Minister, Minister and authorities, members of the organizing committee and all participants in the summit, enjoy the summit, enjoy dairy. Thank you, sir, for your insights into this conference and the promise which this conference brings. And as you mentioned, the last 2 years have been really challenging for everyone because of the COVID. But if you see, the Indian dairy sector has continued to grow at an astounding rate. If we talk about our milk production growing at 6% as against 2% of the global industry. And this happens in spite of the VUCA effect, the volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity casted by the COVID. The Indian dairy sector has exhibited a very resilient growth. So growing and going forward, going ahead for more sustainable and resilient growth of the sector, we now invite the views and the guidance of our Honorable Minister of Fisheries, Animal Husbandry and Dairy, Shri Purushottam Rupala ji. I request and invite the Honorable Minister for his address. आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आपका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं इस वर्ल्ड समिट में। वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 48 साल के बाद भारत में आयोजित हो रहा है और वर्ल्ड समिट में विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में हमारे प्रधानमंत्री श्री इस कार्यक्रम में मौजूद है। ये इस वर्ल्ड स्तर के मेले के लिए बहुत ही एक उपयुक्त संदेश आज यहाँ से होने वाला है। मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री
श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, मंत्रिमंडल में मेरे दोनों सहयोगी डॉक्टर बालियान जी, डॉक्टर मुरुगन जी, हमारे सांसद श्रीमान शर्मा जी, वर्ल्ड डेयरी फेडरेशन के आदरणीय अध्यक्ष ब्राजीलिया, हमारे वर्ल्ड फेडरेशन के डीजी मिसेस कैरोलिना, हमारे सचिव महोदय स्वैन जी, इस सारे कार्यक्रम का आयोजन करने का जिम्मा जिनके कंधों पे हैं, हमारे एनडीडीबी के चेयरमैन श्रीमान मिनेश जी, मंच पर विराजमान हमारे एक और भी सांसद महोदय हैं जो आज सूट पैंट में इधर आए हैं, डेयरी के मालिक के रूप में श्रीमान सागर जी, और सभी हमारे गणमान्य अतिथि एंड ऑल द डेलीगेट्स फ्रॉम द अब्रॉड, आई वेलकम ऑल यू फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट। आप सभी का स्वागत है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, एक करीबन 50 साल के बाद जब समिट हो रहा है और जब 1974 में ये समिट यहाँ हुआ था, तब हमारा दूध का प्रोडक्शन 23 मिलियन था, और आज जब हम इस समिट को कर रहे हैं तो 220 मिलियन टन यानी कि 10 गुना दूध की वृद्धि। और आपका जो स्लोगन है आत्मनिर्भर भारत का, जो 74 में दूध उत्पादन हो रहा था वो हमारी मांग के अनुरूप में कम था, और आज हम एक्सपोर्ट करने की स्थिति में हैं। सो संपूर्ण आत्मनिर्भर अंग के रूप में आज आप यहाँ इस समिट की अध्यक्षता कर रहे हैं, बड़े गरिमा का विषय है। सब इस डेयरी का थीम है डेयरी फॉर न्यूट्रिशन एंड लाइवलीहुड, न्यूट्रिशन के लिए और रोजगारी के लिए, अपनी चलाने के लिए, अपना जीवन यापन चलाने के लिए डेयरी का क्या प्रयोजन है, उसी पर ये थीम पर ये समिट का आयोजन किया गया है। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा सर, इसमें 24 जैसे सेशन होंगे जिसमें अलग अलग एक्सपर्टीज के द्वारा मार्गदर्शन दिया जाएगा, पैनल डिस्कशन होगा। 156 लोग इसमें अपनी बात रखेंगे, 156 लोग अपनी बात रखेंगे। इसमें से 89 लोग एब्रोड से आने वाले हैं, वो अपना विषय यहाँ रखेंगे। इसके जरिए मैं ये जताना चाहता हूँ कि हमारे देश के जो डेलीगेट्स हैं, हमारे जो फार्मर्स हैं, उनको इन सारे एक्सपर्टीज के साथ अपनी बात को साझा करने का, समझने का, इंटरनेशनल गुड प्रैक्टिसेस को देखने का, समझने का बहुत सुंदर अवसर इस समिट के द्वारा हम मिल रहे हैं। हमारे देश में 8 करोड़ परिवार इस बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं, जो दूध उत्पादन के साथ जुड़े हुए हैं। हमारे देश में जो दूध उत्पादन होता है उसका मूल्य है 9.5 लाख करोड़। इतने मूल्य का दूध उत्पादन हम कर रहे हैं। मुझे सिर्फ इस अवसर का मौका लेते हुए ये ज़रूर बताना है कि आज़ादी के बाद हमारे देश के पशुपालन क्षेत्र को हमारे विजनरी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के द्वारा जो ऐतिहासिक गिफ्ट दी गई है, एक तो इस विभाग को स्वतंत्र बना दिए, स्वतंत्र बनाकर 3 गुना बजट एलोकेशन कर दिया। ये विभाग के तौर पे हुआ, मगर देश के पशुपालन क्षेत्र में पूरे देश के पशुपालकों के लिए मोबाइल वेटरनरी यूनिट 4000 मंजूर करके भारत सरकार की ओर से देश के पशुओं की हेल्थ के लिए सबसे बड़ा इंटरवेंशन हमारे प्रधानमंत्री जी की ओर से हुआ। करीबन 700 करोड़ रुपए की लागत से 4332 मोबाइल वेटरनरी यूनिट आपके निर्देशन में मंजूर किए गए हैं। आपने एक हेल्थ के रिलेटेड एक बहुत बड़ा इंटरवेंशन लिया। उत्तर प्रदेश के सम्माननीय मुख्यमंत्री श्री विराजमान हैं। आपने 11 सितंबर 19 को मथुरा से
पूरे देश के पशुओं को वैक्सीनेशन कराने का भारत सरकार के खर्चे से ऐलान किया था। एक बहुत बड़ा इंटरवेंशन आपकी ओर से हो गया और 13,000 करोड़ रुपए की मातबर राशि का भी एलोकेशन आपने इसके लिए किया है। आपने जापान सरकार के साथ सहयोग करते हुए उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे हमारे बड़े और पशुपालन से जुड़े हुए राज्यों को डेयरी डेवलपमेंट करने के लिए एक MOU किया हुआ है और इनके कारण इन दोनों प्रदेशों में आगे चलकर आप डेयरी के कारोबार को बढ़ाना के काम में हम योगदान दे पाएंगे। मुझे ये बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है सर कि इस डेयरी सेक्टर और कृषि सेक्टर को आपने जिस प्रकार से आगे बढ़ाया है और आज आपकी गरिमामयी उपस्थिति से पूरे विश्व में इस डेयरी का मैसेज जब देने वाले हैं, तब मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा कि डेयरी की जब भी चर्चा होती है तो उसमें दूध ही आता है। दूध और दूध के रिलेटेड और चीज़, माखन, घी वगैरह की बात होती है। अब आपके नेतृत्व में और आपके विजनरी मार्गदर्शन में गोबर में से भी प्रोडक्टिविटी करके, गोबर को भी क्रय करके उसका भी आमदनी किसानों को कैसे मिले, इनके लिए गोवर्धन योजना भारत में पहली बार आपके नेतृत्व में चल पड़ी है। और मैं बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि अगली हमारे डेयरियों की जब AGM होगी तो उसमें दूध की आय के साथ साथ गोबर की आय का जिक्र भी होना शुरू हो जाएगा। मैं पिछले पखवाड़े हमारे गुजरात की एक बनास डेयरी के AGM में गया था तो वहाँ जिक्र हुआ था कि उन्होंने 1 करोड़ रुपए का गोबर खरीद करके कार्यक्रम को शुरू भी कर दिया है। सो दूध और गोबर दोनों को मिलाकर जब इसकी अर्थतंत्र पे इफेक्ट होगी तो मेरा नम्र ये मानना है कि देश की अर्थतंत्र को ये बहुत बल देने वाला कार्यक्रम होगा। सर, आज के कार्यक्रम को लेकर आपके एक प्रशंसक ने मुझे कुछ पंक्तियां भेजी है, ये पढ़कर मैं अपने वक्तव्य को विराम देना चाहूंगा। उन्होंने कहा है, हिस्ट्री में हैव मेड प्राइम मिनिस्टर्स बट हियर इज हिस्ट्री मेकिंग प्राइम मिनिस्टर। उनकी बात बस ऐसी ही है कि सब कुछ हो गया है, ऐसी बात नहीं। उनकी बात बस ऐसी ही है कि सब कुछ हो गया है, ऐसी बात नहीं। खुशियों के कारनामे होते रहेंगे, ये बात है। फासले बहुत कम हैं, ऐसी बात नहीं। फासले बहुत कम हैं, ऐसी बात नहीं। वक्त वक्त पे मिलते रहेंगे, ये बात है। कंधे पे बोझ नहीं है, ऐसी बात नहीं। आत्मनिर्भर बनते जाएंगे, ये बात है। हम बार बार वार करेंगे, ऐसी बात नहीं, मगर दुश्मन डरते रहेंगे, ये बात है। राजा को नहीं प्रजा को माना, सिर्फ ऐसी बात नहीं। कर्तव्य पथ पर चलते रहेंगे, ये बात है। ये पंक्तियां आपको समर्पित करते हुए आपके नेतृत्व में जब भारत का अर्थतंत्र 6वीं पायदान से आगे बढ़कर 5वीं पायदान पर इंग्लैंड को पीछे रखते हुए विश्व के अर्थतंत्र के समक्ष एक बहुत ही शक्तिशाली अर्थतंत्र के रूप में उभर रहा है, आपके नेतृत्व में देश और दुनिया को भी मार्गदर्शन मिलता रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ पुनश्च आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, उत्तर प्रदेश के सम्माननीय मुख्यमंत्री जी का और मंच पर विराजमान सभी महानुभावों का और आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी आपके उद्बोधन के लिए। और यहाँ पर उपस्थित सभी के जो भाव हैं, जो श्रद्धा है माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए, उसे इन पंक्तियों के द्वारा यहाँ हमारे साथ साझा करने का बहुत बहुत धन्यवाद। And ladies and gentlemen, our Honourable Minister also highlighted the various conducive policies and environment which in the last 8 years we have seen the government taking it, bringing about a transformational change in the Indian dairy sector. And this year we are celebrating 75 years of our independence, Azadi Ka Amrit Mahotsav.
In the last 75 years, if we see, we have been able to really cast impressive footprints and real massive footprints in the dairy sector. So we would now like to share with you and showcase this outstandingly remarkable and inspiring, transformational and progressive journey of the Indian dairy sector through a short film. And may I request our Honorable Prime Minister, sir, to kindly launch this film with a click of the remote and to declare the IDF World Dairy Summit 2022 open. India, the land of many regions, numerous languages, and 1.3 billion hearts. We look different. We speak different. We eat different. But what we wish is the same. Sarve bhavantu sukhinah, sarve santu niramayaha. May all be happy, may all be healthy. So that together we all stand in the spirit of Ek Bharat Shreshtha Bharat. And this spirit is truly exemplified with one emotion in every heart: milk. An emotion etched in our culture so deeply that without dairy, our daily life is unthinkable. Dairy consumption in India has evolved over time. The National Dairy Development Board implemented Operation Flood in the 70s, which made the cooperative model emerge as the backbone of India's mighty dairy sector. India has come a long way from being a milk deficit nation to becoming a self-sufficient nation in milk, largely produced by small and marginal farmers, which tells the success story of our hard-working farmers and reflects the strength of rural India. Since 2014, under the dynamic leadership of our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi, India's dairy sector has flourished multifold. Milk production increased by more than 44% over the last 8 years, growing at an astounding rate of 6%, which is 3 times faster than the world average. Today, India contributes about 23% of the global milk production. To support the dairy sector, the Government of India, under the guidance of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, has implemented various schemes in the areas of milk production and processing, animal vaccination, dairy infrastructure development, animal identification system, etc. Recognizing the contribution of the sector in the Indian economy, a dedicated Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying and Ministry of Cooperation have been created. India's Nari Shakti and the dairy sector flourished hand in hand, helping over 60 lakh women milk farmers of the country to achieve economic independence and secure the future for the next generation. Through innovation and transformation, dairy found its multiple forms with products like ice creams, sweets, chocolates, ghee, and paneer. Dairy added delight and nutrition to the lives of many. Now, India is all set to further expand the growth in milk production over the next decade. This could pave a way to ramp up exports. The government is setting up village-level dairy infrastructure under a national action plan on dairy development to increase the share of organized milk handling. Concentrated efforts are being made in the areas like smart animal management, digitalization, traceability, and economizing dung by promoting manure management. So, milk flowed over the years as different emotions. It's the hope for every Indian farmer. It's the nutritional delight of every Indian home. It's an emotion called milk. And that's why 100 million dairy farmers thank our Honorable Prime Minister for inaugurating the International Dairy Federation World Dairy Summit 2022. Come, let's raise a toast with a glass full of emotions, a glass full of milk.
So, ladies and gentlemen, as we raise a toast to this flourishing Indian dairy sector with a glass of milk, I think we also agree that the dairy sector has a very vital role and responsible role towards the realization of the Sustainable Development Goals, especially SDG 1, 3, 5, 8, and 10. But then the advancement of these goals definitely require a very determined will and a leadership which is as global, which is as vocal for local as for global. And that is where, ladies and gentlemen, we now seek the views and the guidance of the global leader, our Honorable Prime Minister, whose charismatic leadership is held, and someone who's always believed that this whole world is one big family, Vasudhaiva Kutumbakam. He's always worked with this very spirit. And that is the reason the views and the expressions, the progressive guidance of his today stands equally important to the Indian global sector as to the global dairy sector. So once again, as I thank Honorable Prime Minister on behalf of everyone present here, I now request Honorable Prime Inaugural Address. उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी श्री पुरुषोत्तम रूपाला जी, अन्य मंत्रीगण, सांसद, इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के अध्यक्ष प्री बजाले जी, IDFT डीजी कैरोलिन हेमंड जी, यहाँ उपस्थित अन्य महानुभावी, देवी और सज्जनों, मुझे खुशी है कि आज डेयरी सेक्टर के दुनिया भर के एक्सपर्ट्स और इनोवेटर्स भारत में एकजुट हुए हैं। मैं वर्ल्ड डेयरी समिट में अलग अलग देशों में, अलग अलग देशों से आए हुए सभी महानुभावों का भारत के कोटि कोटि पशुओं की तरफ से, भारत के कोटि कोटि नागरिकों की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डेयरी सेक्टर का सामर्थ्य ना सिर्फ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देता है, बल्कि ये दुनिया भर में करोड़ों लोगों की आजीविका का भी प्रमुख साधन है। मुझे विश्वास है ये समिट आइडियाज, टेक्नोलॉजी, एक्सपर्टाइज और डेयरी सेक्टर से जुड़ी परंपराओं के स्तर पर एक दूसरे की जानकारी बढ़ाने और एक दूसरे से सीखने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी। साथियों, आज का ये आयोजन ऐसे समय में हो रहा है जब भारत ने अपनी